Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel Science of Life with Dr. Muhammad Yusuf. I'm going to continue the discussion of long-term control of blood pressure by the kidneys. But before that, one hadith I would like to quote. لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक इरशाद है, ये सही मुस्लिम में है कि ला यबका मिनल इस्लाम इल्ला स्मुहु, कि एक ज़माना ऐसा आ जाएगा कि इस्लाम में उसके नाम के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। इस्लाम बस नाम रह जाएगा इस्लाम का। और वला यबका मिनल कुरान इल्ला रस्मुहु, और कुरान में उसके रस्मुल ख़त लिखाई के हरफों के बजाय के अलावा कुछ ना बचेगा, उसके हुरूफ के सिवा कुछ ना बचेगा। तो वो ज़माना अल्लाह देखें, वक़्त गुजरने के साथ इस्लाम को हमने छोड़ के इस्लाम को क्या से क्या बना दिया हम लोगों ने। और कुरान को भी हमने फ़िलहाल तो हमने सवाब की किताब बनाया हुआ है, और उस पर अमल, जो उसका मकसद है दुनिया में भेजा जाने का कि इसको समझ के इस पे अमल किया जाए, वो हम आस्ता आस्ता छोड़ते अब सिर्फ हम एक हरूफ रह गए हैं, उसके हरूफ को हम पढ़ते हैं। कुरान हमारे पास मौजूद है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक वो ज़माना आस्ता आस्ता आ रहा है। अल्लाह पाक हमें समझ अमल की तौफीक अता फरमाए कि हम सही इस्लाम पे अमल करें और सही कुरान के उसके हमारे अमाल उसके मुताबिक हो। अल्लाह पाक हमें समझ अमल की तौफीक दे। So we were discussing the renal body fluid system for the arterial pressure control, and we discussed the renal output curve, and we saw that is the two determinants of the long-term blood pressure are the renal output curve and the intake of salt and water. If both these are normal, blood pressure will remain normal. If some blood pressure is to be elevated, something wrong with the intake of salt and water or renal output curve, the two determinants of the long-term blood pressure we discussed in the previous lecture. The role of peripheral resistance, peripheral resistance in the long-term regulation of arterial pressure. We know the equation. This blood pressure is proportional to cardiac output and peripheral resistance. We have talked several times this. But long-term increase in the peripheral resistance without changing those two determinants of the long-term blood pressure. If only peripheral resistance is increased or decreased, without changing the renal output curve and salt and water intake, these two determinants we discussed in the previous lecture, this does not maintain elevated blood pressure. If initially this increase in the peripheral resistance will elevate the blood pressure, no doubt. Excuse me. Increasing peripheral resistance, if sympathetic stimulation occurs, peripheral resistance increases and blood pressure will be elevated. Any condition in which the peripheral resistance is acutely increased, there will be increase in the blood pressure, but that will not be maintained. If the salt and water intake is normal, or this renal functions are normal, renal output curve is normal. Because whenever there is increased peripheral resistance, it does not change the equilibrium point. Salt and water intake normal, kidney function, renal output curve normal, that equilibrium point will be at 100 millimeter of mercury. So if there is increase in the peripheral resistance and increase in blood pressure, then that equilibrium, that renal output curve will be shaped. Bring this to the equilibrium point. That is at 100 millimeter of mercury. It will bring. So when there is increased peripheral resistance, immediately there will maybe rise in the blood pressure. That will cause the pressure diuresis, increase GFR. Here I have written increase GFR, one of the factors. Pressure diuresis may very important role of GFR, which we have not talked about. We will discuss in kidneys. But the renal output curve depends upon GFR.
glomerular filtration rate. So increased arterial pressure will cause the pressure diuresis, increased GFR, there will be loss of sodium, pressure diuresis will occur. There will be pressure diuresis and the arterial pressure will return to the normal. So long-term increase, the peripheral resistance does not maintain the elevated blood pressure. अगर उसकी वजह से बढ़ा है तो it is the volume. If volume is added constantly, then the blood pressure may be increased. वो हम देखेंगे आगे. Volume loading hypertension. So long-term increase in the peripheral resistance does not increase the blood pressure. अब हम ये कह सकते हैं. Does not increase the blood pressure as long as the renal output, carbon, salt, and water intake are not disturbed. If they are normal, then whatever the peripheral resistance may be for the long term, we are going to see different conditions in which there is a long term increase or decrease peripheral resistance, but the blood pressure is normal in all those conditions. We are going to see in next diagram, inshallah. If the renal output curve is normal, if the salt and water intake is normal, those two determinants of the long-term blood pressure, if those are normal, blood pressure will remain normal, whatever the peripheral resistance may be very high, may be very low. So pressure diuresis will occur if the increased peripheral resistance causes more blood pressure. Now the relationship between the peripheral resistance, cardiac output, and arterial pressure in different clinical conditions. We are going to see different conditions in which there is very low peripheral resistance or very high peripheral resistance, but the blood pressure remains normal. जो पिछली statement है उसको हम देखेंगे. When there is increased arterial pressure, when arterial pressure is normal, whatever the peripheral resistance may be, you can see. Arterial pressure remains normal, whatever the peripheral resistance may be. This is one condition, very. This is total peripheral resistance, percent of the normal. 100% of the normal means normal, 1 PRU. जिसको हमने पहले डिस्कस किया था. Normal peripheral resistance is 1 PRU in the greater circulation. So normal peripheral resistance 100% normal, that means 1 PRU. It is the blood pressure is normal. This is the black line, this is the blood pressure, this is arterial pressure. This arterial pressure is normal. This black line is the arterial pressure. Blood pressure is normal. Cardiac output is normal, 100% normal, and the peripheral resistance is normal. ये तो वो equilibrium point है. But in very, you can see the peripheral resistance is here, somewhere here, 45%, 50%. Very, there is tremendous fall in the peripheral resistance. But the person suffering from very, this is the chronic reduction in the peripheral resistance because of the very. We see the blood pressure is normal here. Why? Because this low peripheral resistance does not maintain low blood pressure. Renal output curve will shift it to the 100 millimeter of mercury equilibrium point. It will bring it at equilibrium. How? It will cause the retention of salt and water. It will increase the blood volume. It will increase the cardiac output. This red curve is the cardiac output. Cardiac output is 200. So cardiac output will increase 200%. So when there is low peripheral resistance, renal output curve will bring it to the equilibrium point at 100 millimeter of mercury by increasing the cardiac output. How? Retention of salt and water, increase blood volume, and it will cause increased venous return cardiac output. Cardiac output will be elevated. Another condition, AV shunt, peripheral resistance is very low, but the kidney can maintain equilibrium point at 100 millimeter of mercury. The cardiac output will be elevated. See, that is the anemia, hyperthyroidism, anemia. There is anemia, peripheral resistance is reduced. We talked about something. Anemia means quick blood flow is possible because of the viscosity of the blood is reduced. So peripheral resistance to the blood flow is reduced. So in anemia, peripheral resistance may be 60%, 70%, but the renal output curve will bring this to 100 millimeter of mercury, whatever the peripheral resistance may be.
and this is achieved by increasing cardiac output. So cardiac output will be high in anemia. Anemia में cardiac output high होता है, hyperdynamic saturation होती है. So our other condition, the pulmonary diseases, वो भी एक एनीमिया. So Paget's disease, in all these condition, ये जो इस लाइन से ऊपर ऊपर, all these condition in which the peripheral resistance is less than 100%, it is less than 100%, only 80%, 90% of the peripheral resistance, cardiac output is elevated by the kidneys. It is the kidney which is maintaining increased extracellular retention of salt and water, increasing the blood volume and extracellular fluid volume, and cardiac output is increased, and the blood pressure remains normal. And those two conditions, removal of the front limbs in that animal, the resistance has increased resistance, it is 140%, and but the kidney will bring increased resistance, will increase the blood pressure, it will cause the pressure diuresis, and equilibrium point will be achieved, more loss of water will occur, and it will bring the equilibrium point by reduction in the cardiac output. And last of our hypothyroidism में, this is again the reduced peripheral resistance, and cardiac output is reduced to maintain the normal blood pressure. Resistance कम हो गया, resistance ज़्यादा हो गया, resistance hypothyroidism, that is last one is the hypothyroidism. In hypothyroidism there is increased peripheral resistance, chronically elevated peripheral resistance, but the blood pressure usually remains normal, because increased pressure will cause the pressure diuresis, equilibrium point पे ले आएंगे, and the cardiac output will be reduced. So cardiac output is reduced. So क्या statement होगी? Whatever the peripheral resistance may be, if the renal output curve and the salt and water intake are normal, blood pressure will remain normal. So the cardiac output is adjusted to keep the pressure at the normal level. We have discussed it. That is, peripheral resistance and chronic decrease in the peripheral resistance does not maintain the reduce or increase blood pressure respectively. If the chronically elevated peripheral resistance, blood pressure will remain normal. Chronically low peripheral resistance, blood pressure will remain normal, because the cardiac output will increase, and in those conditions cardiac output has been reduced. So cardiac output is adjusted by the kidney. Kidney काम कर रहे हैं. Kidney is increasing the blood volume and cardiac output. Kidney is decreasing blood volume and cardiac output in those two conditions. So this is the relationship. So long-term increase in the peripheral resistance does not maintain elevated blood pressure. Now it is the increase extracellular fluid volume long term. अगर ये increase हो जाए ना long term के लिए, then this will increase the blood pressure. ये जो chronic salt sensitive people जो हमने कहा, there is increased extracellular fluid volume in those people, and blood pressure may remain. So increased extracellular fluid volume will increase the arterial pressure by two mechanisms. There are two mechanisms of increased arterial pressure. By increased extracellular fluid volume, we term is at volume loading hypertension. वॉल्यूम की वजह से वॉल्यूम हाइपरटेंशन इसको हम बोलते हैं. सो इंक्रीज एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम और इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम इंक्रीजेस द ब्लड प्रेशर बाय टू मैकेनिज्म. वन इज डायरेक्ट क्या है? इंक्रीज कार्डियक आउटपुट इंक्रीजेस द प्रेशर डायरेक्टली. कैसे वो अब देखें. इंक्रीज एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम, द टॉप मोस्ट हमने लिखा हुआ है, इंक्रीज एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम, दिस विल कॉज द इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, this will cause the increase mean circulatory filling pressure, जिस पे डिपेंड करता है increase venous return, और जिस पे डिपेंड करता है increase cardiac output. So any condition, so increase extracellular fluid volume will increase cardiac output. This simple है. अगर ये बाकी बातें अगर ना भी समझ आए, वी आर गोइंग टू डिस्कस दी मीन सर्कुलेटरी फिलिंग प्रेशर नेक्स्ट, हम डिस्कस करेंगे कार्डियक आउटपुट वगैरह जब. बट यू हैव गॉट द आइडिया. इफ देयर इज इंक्रीज एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम, देयर इज इंक्रीज मीन सर्कुलेटरी फिलिंग प्रेशर, एंड वीनस रिटर्न इज इंक्रीज. वीनस रिटर्न इंक्रीज होगा, इंक्रीज वीनस रिटर्न विल कॉज इंक्रीज कार्डियक आउटपुट. दिस इज फ्रैंक स्टार्लिंग्स लॉ. व्हाटएवर द वीनस रिटर्न इज, कार्डियक आउटपुट विल बी अकॉर्डिंग एडजस्टेड, इट विल बी मोर. So this increase cardiac output, ये जो इक्वेशन है, this will increase the peripheral resistance. जो आज का लेक्चर हमने शुरू किया,
blood pressure is proportional to cardiac output. Peripheral resistance को proportional है, लेकिन उसके साथ handling हम देख के आ गए हैं क्या उसका मकसद है. So this is direct. Increase extracellular fluid volume, increases the blood pressure. This is the direct mechanism. Indirect भी है. This increased cardiac output. What is this? This cardiac output will be distributed throughout the body. ये जो 5 लीटर के बजाय 6 लीटर 7 लीटर of cardiac output, ये blood कहाँ जा रहा है? It is going into all the tissues. So local blood flow, if you remember the control of local blood flow. So this increased cardiac output increases the local blood flow to the tissues, and there is auto-regulatory mechanism in every tissue. They do not allow extra volume of the blood to them. Tissues को ज़्यादा supply नहीं करते. So what they do, they try to reduce the blood flow to the kidney in the form of vasoconstriction. So this will indirect mechanism will be cardiac output will increase the blood flow, auto-regulation will cause the vasoconstriction throughout the body, and it will increase the peripheral resistance. So initially it was increased extracellular fluid volume, but it results into increased peripheral resistance as well. So this will increase the arterial pressure. So direct भी increase blood pressure की हमने बात की volume loading से, and indirectly peripheral resistance is also induced. So increased cardiac output will cause the auto-regulation and increase total peripheral resistance and increase arterial pressure. So this is it is peripheral resistance, chronic elevation or reduction does not chronically elevate the blood pressure, but increase extracellular fluid volume. This affects the long-term blood pressure. So this is by two mechanisms, direct as well as indirect. So blood pressure is proportional to both of these. So this volume has increased and peripheral resistance has also increased by this indirect mechanism. So blood pressure will remain elevated. And if there is extracellular fluid volume, अगर ज़्यादा रहे तो normal से. Excessive pure water intake does not maintain the elevated pressure. ये बात भी, ये हमने पीछे जाएं, ये क्या लिखा हुआ है? Increase extracellular fluid volume. If this increased extracellular fluid volume is due to over excessive intake of water, only pure water, it is not maintained. Excessive pure water intake does not maintain the elevated pressure because elevated extracellular fluid volume is not maintained. Because of this, diluted extracellular pure water will be added, when the extracellular fluid volume will be added, diluted, and they will reduce ADH production. Endocrinology, agar if you have got some idea, if the body fluids are diluted, water zyada ho jaye, then ADH is inhibited, and absence of ADH will cause more diuresis, loss of water in the urine. So there will be reduction in the ADH secretion. So this extra pure water sirf piya hua hai, it will be lost in the urine. So volume cannot be maintained, pressure cannot be elevated, pressure cannot be maintained. Water is very quickly excreted in the urine because of absence of ADH. Excess salt intake is more important. Water नहीं, salt intake. अगर सिर्फ salt ज़्यादा खाया, that will increase the extracellular fluid volume. Salt खाया तो उसके साथ नमक भी जाएगा. So excess salt intake is more important for long-term elevation of arterial pressure because salt खाएंगे तो there will be thirst mechanism. This diluted extracellular fluid volume fluid के बजाय there will be concentrated extracellular fluids, and this will cause the more thirst. जितना ज़्यादा हमारा extracellular fluid concentrate हो जाए, पानी कम हो जाए, that will salt ज़्यादा हो जाए, दोनों बातें एक ही हैं, पानी कम हो जाए या salt ज़्यादा हो जाए, it will cause the hyperosmotic extracellular fluid volume that will stimulate the thirst center in the hypothalamus. वो आपने शायद idea होगा, thirst center will be stimulated and ADH production will be stimulated. दोनों ये काम करेंगे. Thirst center will add water by drinking water, thirst mechanism, and ADH will cause conservation of water from the kidney. Both will be added and the ADH mechanism भी operate करेगा. Both will cause the addition of water and the osmotic retention of salt and water will occur, and the
this excess salt and water intake will cause the elevated blood pressure. Now, chronically elevated blood pressure, जिसको हम chronic hypertension कहते हैं, a few important figures हमें याद रखनी है. That is, if the mean arterial pressure is more than 100 millimeter of mercury, we label it as hypertension. Hypertension हम कब कहेंगे? जब if the mean arterial pressure is more than 100 millimeter of mercury, normal 100 होता है. Diastolic pressure अगर 90 से ज़्यादा हो जाए तो we usually call it as hypertension. 90 से नीचे नीचे हो तो खैर है. Severe hypertension में mean arterial pressure may be as high as 150, 170. This is very high. Mean arterial pressure 150 to 160, 170 millimeter of mercury. This is very severe hypertension. Systolic pressure may be elevated to maybe 50, 250, or diastolic pressure may be elevated to this level, or even more than that. You will see in your clinical classes, you will observe the patients having very high systolic pressure as well as very high diastolic pressure, more than even this 130 millimeter of mercury. So this is the chronic hypertension. इसको हम देखेंगे कि hypertension develop कैसे होती है. वॉल्यूम लोडिंग hypertension अभी हम बात करते हैं, जरा सा आइडिया हो जाए hypertension की होती है. hypertension अगर हो जाए खैर है, कोई बात नहीं. No consequences, उसका रिजल्ट क्या है? Elevated pressure shortens the life expectancy. इसको हमने ठीक रखना है. Lethal effects उसके drastic effect of this increased blood pressure will increase the workload on the heart. Simply, if the pressure is more in the vessel, heart has to force the blood through this high pressure. Heart ने तो पंप करना है, अंदर वेसल में प्रेशर ज्यादा हो तो उसको ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा. So workload on the heart is increased, and that will cause the hypertrophy of the heart. In hypertension, there is usually hypertrophy of the heart. उसको हम hypertensive cardiomegaly कहते हैं. Increase size of the heart, hypertrophy of the heart because of the hypertension. Hypertensive hypertrophy उसको कह लें. And चलो बड़ा हो गया हार्ट, उसका क्या नुकसान हो सकता है? It may cause the heart failure or coronary artery diseases. कितना जोर लगाएगा? ऐसा भी हो सकता है कि वो जोर इतना ना लगा सकते. कार्डिक फेलियर भी आर गोइंग टू डिस्कस. फिलहाल हम उसको डिटेल में नहीं जाते. कार्डिक फेलियर कैसे जा सकता है? हाइपरट्रॉफी इज मोर फोर्सफुल हार्ट, मोर पावरफुल हार्ट, लेकिन कब तक? देयर इज अ लिमिट. तो अगर लिमिट क्रॉस होगी हार्ट फेलियर में भी आएगा. एंड इफ द टोटल मास ऑफ द हार्ट हैज इंक्रीज और कॉर्नरी वेसल्स दे मे नॉट बी सफिशिएंट टू सप्लाई द ब्लड फ्लो टू दिस वेरी एक्स्ट्रा लार्ज हार्ट मसल्स, एंड देयर विल बी कॉर्नरी आर्टरी डिजीज, एंजाइना वगैरह जो हमने थोड़ा सा बहुत डिस्कस किया हुआ है. So increased blood pressure may cause this hypertrophy as well as the heart failure as well as the hypertensive heart failure उसको बोलते हैं. फिर hypertensive heart is not able to force this against very high pressure. वो ज्यादा जोर नहीं लगाता. hypertrophy होने के बावजूद भी it may go into heart failure or it may go into the coronary artery disease. Increased blood pressure causes damage to the cerebral blood vessels, and it is common now cerebral infarct or cerebral ischemia, dementia, or blindness, or CBA, etc. may occur. So hypertension के ये भी consequences हैं. Increased blood pressure may cause damage to the kidneys. हमने पिछली लेक्चर में देखा था. Hypertension may cause the damage to the kidney, and gradual renal destruction may cause the elevation of the blood pressure. और ज़्यादा बढ़ाएगा. Renal failure may occur or uremia may occur. Renal damage may occur. Renal destruction, uremia, renal failure, etc. may occur. Hypertension खतरनाक चीज़ है. Now, this hypertension वॉल्यूम लोडिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट दी हाइपरटेंशन के कैसे डेवलप होती है. वॉल्यूम लोडिंग हाइपरटेंशन वी आर गोइंग टू सी रिमूवल ऑफ मेजर पोर्शन ऑफ द किडनी. अब हम हैंडल करने लगे हैं कि कैसे वॉल्यूम लोडिंग हाइपरटेंशन होती कैसे है. एक्सपेरिमेंटली हमने क्या किया? रिमूवल ऑफ मेजर पोर्शन ऑफ द किडनी एक एनिमल में हमने कर दिया. देन ओनली स्लाइट इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर. हमने किडनी हटा दिया, लेकिन अगर उसको छोड़ दें तो मे भी थोड़ा सा ब्लड प्रेशर बढ़ जाए. लेकिन if this animal is given salt solution, then this animal is not be capable of handling this. वो थोड़ा सा जो मास रह गया वो हैंडल कर रहा है, ओके ब्लड प्रेशर मेंटेन हो गया, but the total mass of the kidney has been reduced
जो हमने कहा कि ओल्ड एज में मास ऑफ द किडनी इज रिड्यूस इन नॉर्मली भी वो कम होता है। इस एनिमल में हमने एक्सपेरिमेंटली उसमें कम कर दिया है। इफ salt and water intake in elderly people, ये वही हो जाएगा। Salt and water given to this animal will cause the up to 40 millimeter rise in the blood pressure within a few days. अगर salt and water इसको हम देते हैं, there will be increase because this small mass of kidney is not capable of handling this extra salt and water. इसको handle नहीं कर पाएगा। So there will be elevation of the blood pressure within a few days to 40 millimeter of mercury, वो बढ़ जाएगा। अगर टैप वाटर इसके बजाय दें, सॉल्ट एंड वाटर देने के बजाय टैप वाटर दे उल्टा हो जाएगा ना। टैप वाटर तो इट इज लास्ट इन द यूरिन, वो तो आसानी से एडीएच मैकेनिज्म में इट विल बी सॉल्ट एंड वाटर होगा दैट विल बी रिटेन्ड, बट इट्स ओनली टैप वाटर इट विल बी लास्ट इन द यूरिन एडीएच के मैकेनिज्म से। टैप वाटर इनटेक रिड्यूसेस द प्रेशर अगेन। इसको हम देंगे आगे, डायग्राम भी आ रही है इसी एक्सपेरिमेंट पर, डायग्राम मौजूद है। तो अगर फिर दोबारा इसको हम देंगे अगेन साल्ट सोल्यूशन देने लगे इस एनिमल को, रीस्टार्ट ऑफ इनटेक ऑफ साल्ट एंड वाटर रेजेस द ब्लड प्रेशर मोर रैपिड। किडनी डैमेज हो चुके हैं, अब इसमें एलिवेट किया ब्लड प्रेशर, ये 40 में इसने और डैमेज किया होगा, वॉल्यूम लोडिंग और एंड फिर अगला साल्ट एंड वाटर जितना देते जाएंगे देयर विल बी मोर रेज इन द ब्लड प्रेशर। ओनली 30% ऑफ द किडनी अगर रह जाएं, दे आर नॉट कैपेबल ऑफ हैंडलिंग दिस एक्स्ट्रा साल्ट एंड वाटर। वैसे नॉर्मल किडनी जो हमने देखा 6 टाइम एक्स्ट्रा साल्ट एंड वाटर इनटेक किडनीज आर कैपेबल ऑफ हैंडलिंग, उसके अपने मैकेनिज्म एंड हार्मोनल मैकेनिज्म एटसेट्रा मिलकर, बट दी ओनली 30% ऑफ द किडनी रह जाए, दे आर नॉट कैपेबल। तो इसलिए एल्डरली पीपल में जिनमें किडनी डैमेज होते रहते हैं, ग्रेजुअल नेक्रोसिस होती रहती है नेफ्रॉन की, उसको बूढ़े लोगों में हाइपरटेंशन डेवलप होने के चांस ज्यादा होते हैं इफ दे साल्ट एंड वाटर अगर वो रिस्ट्रिक्ट न करें तो। ये वो डायग्राम दिखा रही है। दिस इज 30 to 40% ऑफ द किडनी इज रिमूव्ड लेफ्ट किडनी का। हम देखते हैं कि ब्लड प्रेशर, दिस इज द मीन आर्टरियल प्रेशर, हम देखते हैं कि थोड़ा सा एलिवेट हुआ है, यहाँ पे रिमूव किया थोड़ा सा एलिवेट को ज्यादा पर। एंटायर लेफ्ट किडनी भी हमने रिमूव कर दिया है, साल्ट एंड वाटर को ज्यादा नहीं किया हमने, सिर्फ किडनी का मास कम कर दिया, अभी तक ये हैंडल कर रहा है। Now we are giving 0.9% sodium chloride to this animal. We observe this rise because this only small mass left, 30% kidney left is not capable of handling this extra salt and water, so blood pressure will be elevated somewhere. और उसको जब टैप वाटर दें या प्योर वाटर देंगे, टैप वाटर देंगे या प्योर वाटर देंगे, साल्ट देने के बजाय उसको वाटर देंगे, तो ब्लड प्रेशर विल रिटर्न टू द नॉर्मल। अब किडनी वो सारा निकल जाएगा, ब्लड प्रेशर द एक्स्ट्रा वाटर विल बी लॉस्ट यूरिन एंड इट विल बी रिटर्न टू द नॉर्मल। लेकिन साल्ट एंड वाटर को दिस एनिमल विल नॉट टॉलरेट एक्स्ट्रा साल्ट एंड वाटर, उसको दोबारा साल्ट एंड वाटर देंगे, मोर एलिवेशन मोर देन दिस एज वेल, इससे भी ज्यादा जाएगा ब्लड प्रेशर एलिवेटेड। सो दिस इज हाउ the volume loading hypertension develops if there is some damage to the kidney खराब होंगे, any disease in the kidney causing something wrong with the renal output, renal functions खराब होंगे, there will be elevation of the blood pressure, current elevation of blood। volume loading hypertension का एक और एक्सपेरिमेंट इसमें देख लें, इसमें वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, एक खास बात इसमें बताने के लिए ये एक्सपेरिमेंट है। नाउ द आफ्टर रिमूवल ऑफ मेजर पोर्शन ऑफ किडनी, हमने क्या किया, कांस्टेंट एक्सेसिव इनटेक ऑफ साल्ट एंड वाटर उसको एनिमल को दिया। व्हाट वी ऑब्जर्व, दैट इज इनिशियली व्हाट वी ऑब्जर्व, इंक्रीज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम, देयर विल बी इंक्रीज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड, यस 20% इंक्रीज हो गया, एंड द कार्डियक आउटपुट इज इंक्रीज 40% इंक्रीज हो गया, एंड द प्रेफर रेजिस्टेंस इनिशियली इज रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द डायलेटेशन ऑफ द ब्लड वेसल। जब ज्यादा वॉल्यूम दिया तो डायलेट करेंगे, हमने ब्लड फ्लो इज ब्लड फ्लो sorry, the more blood volume will dilate the blood vessel to some extent, and that will reduce the peripheral resistance initially, but later on there is increased peripheral resistance. We have just discussed, अभी इसको दोबारा मैं बात करता हूँ, we have just discussed volume loading causes increased peripheral resistance by auto regulation।
हमने अभी पिछली 1-2 स्लाइडों में बात की थी कि इंक्रीज वॉल्यूम, द वॉल्यूम हैज इंक्रीज, हमने एक्स्ट्रा वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम हैज इंक्रीज, ब्लड वॉल्यूम, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट एक्स्ट्रा इंक्रीज, एंड दिस causes the increased prefer resistance as well, secondary to that, and blood pressure is elevated. क्यों? Resistance is also elevated, and the या तो initially there is increased cardiac output, ये red cardiac output is increased, blood pressure is increased, but what we observe with the passage of time, days के साथ हमने क्या देखा? There is reduction in the extracellular fluid volume, there is reduction in the blood volume, there is reduction in the cardiac output, and there is reduction in constant increase in the preferred resistance, वो indirect auto-regulatory mechanism जो हमने discuss किया था. So what we observe, there is constant elevated blood pressure. Even all those things have gone to their normal except the peripheral resistance. Now इसको देखें, volume loading hypertension after a few days क्या हुआ? This is ये दो, after a few days, that is 14 days पे जो हम देख रहे हैं, after a few days extracellular fluid volume is only 4% elevated, this one. And then the blood volume is only 5% elevated, and the cardiac output is only 5% increase, but the peripheral resistance remain elevated. It remains elevated, and the blood pressure remains elevated. This is volume loading hypertension. ये वॉल्यूम को अगर हैंडल ना कर पाए किडनी, that's how this extra volume causes hypertension. हाइपरटेंशन, कार्डियक आउटपुट वगैरह सारे नॉर्मल हो गए, ऑलमोस्ट नॉर्मल हो गए, बट द ब्लड प्रेशर परसिस्ट बिकॉज ऑफ दिस मैकेनिज्म. तो वॉल्यूम लोडिंग हाइपरटेंशन ऐसे डेवलप होती है. सो 2 स्टेजेस ऑफ वॉल्यूम लोडिंग हाइपरटेंशन. एक तो वो डायरेक्ट वाली देखी ना, अर्ली स्टेज में क्या हुआ है और लेट स्टेज में क्या हुआ. अर्ली स्टेज में तो इंक्रीज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम था एंड उसमें ऑलमोस्ट नॉर्मल हो गया लेट स्टेज में, और दी इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम था अर्ली स्टेज में जो शुरू में हमने दिया उसको, एंड ऑलमोस्ट नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम हो गया, 4% ज्यादा रह गया था, और कार्डियक आउटपुट भी शुरू में ज्यादा था लेकिन वो लेट स्टेज में कार्डियक आउटपुट भी सिर्फ 5% अबव नॉर्मल रह गया था, ऑलमोस्ट नॉर्मल हो गया था. लेकिन प्रेफर रेजिस्टेंस जो है वो शुरू में कम था, फिर बढ़ता गया और वो बड़ा रह गया. वो ग्राफ में हम देखा that remains elevated throughout, and blood pressure remains high in these. So initial they fall in the pressure, and then the peripheral resistance remains elevated, and that is hypertension. So increased peripheral resistance is secondary to cardiac output and autoregulation. ये क्यों हुआ है? That is autoregulatory mechanism. More blood flow causes vasoconstriction, and the peripheral resistance has increased. तो इम्पॉर्टेंट आखिरी 1-2 बातें कर लें. पेशेंट्स विदाउट फंक्शनल किडनी, जिनकी किडनी खराब हो, ये हमने कब देखा कि किडनी खराब है, तो उनमें वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट दी वॉल्यूम लोडिंग. उनमें जिनमें स्पेशली दी डायलिसिस पर है, डायलिसिस आर्टिफिशियल किडनी है, डायलिसिस करवा रहे हैं, दैन दी वॉल्यूम लोडिंग का खतरा बहुत ज्यादा है. केयर मस्ट बी टेकन टू एग्जैक्टली बैलेंस दी इनपुट एंड आउटपुट. वो ज्यादा नहीं होना, वॉल्यूम लोडिंग हमने बिल्कुल नहीं करनी इफ देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द किडनी. तो ड्यूरिंग डायलिसिस only a few slides are 2 slides are left. So during care has to be taken to exactly balance the output and output of the salt and water during dialysis, during infusion of fluid to these people, and the extra addition of salt and water may cause this volume loading hypertension जो हम discuss करके आएंगे. Increase extracellular fluid volume, increase blood volume, increase cardiac output, increase peripheral resistance, etc. जो volume loading की हमने chances पढ़ के आए हैं. तो आखिरी 2 स्लाइड ये देख लें कि प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म जिसमें हाइपर सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरोन होती है, उस वो क्या करती है. इफ देयर इज एल्डोस्टेरोन इज मोर, इफ देयर इज मोर एब्जॉर्प्शन ऑफ साल्ट एंड वाटर, ये तो है, एंड दैट विल बी वॉल्यूम लोडिंग हाइपरटेंशन. वो कर सकती है लेकिन आमतौर पर शुरू में नहीं करती बिकॉज ऑफ द एल्डोस्टेरोन एस्केप मैकेनिज्म. वो हम बात करेंगे. इफ परसिस्ट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन द वॉल्यूम लोडिंग हाइपरटेंशन में अक्सर, इफ परसिस्ट फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम aggravates and occurs due to the damage to the kidneys and then the elevated blood pressure. इस एक्सपेरिमेंट को हम देख लें. एल्डोस्टेरोन लेवल 20% अबव कर दें तो मीन प्रेशर विल बी एलिवेटेड.
लेकिन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम 20% इंक्रीज करेगा. ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम हैज इंक्रीज. दिस इज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम हैज इंक्रीज. एंड यूरिनरी सोडियम एक्सक्रीशन ट्रेमेंडस रिडक्शन. ये क्यों हो रहा है? दिस इज रिटेंशन ऑफ साल्ट एंड वाटर, और वो भी कम हो जाए. सोडियम, साल्ट एंड वाटर, यूरिनरी सोडियम एक्सक्रीशन ऑफ साल्ट एंड वाटर, देयर विल बी tremendous reduction, but then there will be elevation. This is known as aldosterone escape mechanism. What is cause of that? This increased extracellular fluid volume increases the blood pressure. It causes the pressure diuresis, or instead of salt loss, there will be excretion of salt and water. But if this persists for longer duration, it causes damage to the kidney and the permanent hypertension may occur. वॉल्यूम लोडिंग हाइपरटेंशन में अकर. सो एल्डोस्टेरोन एस्केप मैकेनिज्म, फिर इसको हम बात करेंगे. वी विल कंटिन्यू दिस डिस्कशन इन द नेक्स्ट लेक्चर एज वेल. लॉन्ग टर्म कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर, सम मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स आर लेफ्ट. तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम बात करेंगे, उसको फिर ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह, लॉन्ग टर्म कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर को. थैंक यू वेरी मच. होप यू आर फॉलोइंग मी. इफ यू हैव गॉट सम क्वेश्चन तो आस्क इन दी कमेंट सेक्शन, एंड शेयर भी करें मेरी साइट को और इस वीडियो को, और सब्सक्राइब भी करें इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब. थैंक यू वेरी मच.